की वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, हमारे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं आशीष सर, उनकी हमें ईमेल्स रिसीव नहीं हो रही, तो हम लोग पूछना चाहेंगे कि ईमेल्स क्यों नहीं आ रही। और इसके साथ हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसका एक पार्ट हम लोगों ने कल देखा था, सेकंड पार्ट हम लोग आज देखने जा रहे हैं। और टाइटल बताएंगे मौज। टाइटल है गौर गोपाल दास ऑन हिज चाइल्डहुड रिलेशनशिप लाइफ लेसन एंड स्पिरिचुअलिटी द रणवीर शो। वेल, कल तो हम लोगों ने जो वीडियो देखी थी उसमें थोड़ा फोकस के बारे में, लाइफ के बारे में हम लोगों ने देखा था और सुना था, और आज क्या वो बताते हैं आज की वीडियो में वो देखेंगे आपके साथ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। Do you meditate like before bed, like before sleeping? My meditation is, before bed, my meditation is a gratitude practice. Like prayer? Prayer. Every evening before I go to bed is a practice of gratitude, recounting all the things that happened in the day and being grateful for everything that happened, consciously practicing gratitude. And eventually it just becomes a part of you anyways. Yeah. And the first thing in the morning as soon as I am up is also beginning my day with gratitude. And then of course I have a specific time for meditation as well, which I spend like an hour and a half every day. What do you do in your meditation? Because you know there's so many different kinds of meditation. Correct. So what does someone like you do to meditate? How do you meditate? When I came to the monastery, the meditation I was taught was mantra meditation, which is chanting on beads. So I chant a mantra. And as I began the process, I realized how challenging it was to be present into the sound of the mantra and to be totally in a space, in a zone of thoughtlessness where there's nothing bothering your mind and you're completely present and listening to the sound and totally absorbed, in the sound. I realized that it was a massive uphill task, and I think the challenge comes from the fact that we've got so used to multitasking that our mind functions on 20 tracks. So when we're just on the meditation track, there are 19 other tracks to deal with. Yeah. You have your personal life, you have relationship issues, you have professional issues. There's so many things going on. Issues coming from family, so much going on in the country. There's so much that's occupying our mental space. And when you actually want to get onto the track of meditation by kind of just putting all of this in the back seat, it becomes practically impossible. And a lot of people tell me this. And when they're trying to meditate, this is what happens to them. And I share my journey with them. This is exactly what happened to me when I started. It's been 25 years now, every single day without one day's gap, 1.5 hours every day. And I tell them that it's not a challenge today. It would be very high-headed to say that, okay, I've reached a state of enlightenment. When I sit for meditation, everything's kind of there and I'm totally absorbed. Very high-headed, I feel, to say that. But I did a few things that I feel can benefit those who want to really get into a deeper state of meditation. I look at meditation in two ways. A is the meditation as in the practice. And B is everything that we do in our life as meditation. And I prefer to work more on everything in my life as a meditation, which feeds into my practice of meditation. 100%. But do not neglect the practice. No, do not neglect the practice, for sure. Yeah. So, I'll tell you what I do, for instance. One meal a day, I just eat by myself. 2 meals I take with my friends, some of my monk friends, where we discuss, chat, eat. 1 meal is just by myself. The reason being, I want to be present, mindful, in the moment, to savor the entire experience of touching, feeling, smelling, tasting that food. I avoid forks and spoons as much as possible because I want to touch and feel that experience of the food. Now, the reason I do it is because it just means no phones, no books, nobody to talk to, and just being there eating. Correct? So what I'm doing is, by just eating that 1 meal by myself, training my mind to be in the present. Like we are talking now. There's 3 meetings lined up for me tonight. And there's a restaurant called Candy and Greens at Breach Candy. The family is a very close friend, So they've just opened up a new rooftop terrace. I'm getting message after message, could you come down today evening for dinner? Right. But
It's not on my mind. It's not on my mind. Nothing outside of our conversation between you and me right now is on my mind. So why do I do it? It's because right now I'm training my mind to be in the present. When I used to be in the bathroom, I would sing. Like a big thing for me used to. Of course, earlier I would sing a lot of cinema and movie songs, and now I sing some spiritual songs, bhajans, whatever. And then one day I realized, hey, wait a minute, this is not right. Because neither am I into the singing, nor am I into the experience of bathing. So if I'm singing, I'm missing the experience of bathing, and if I'm bathing, I'm not into my singing. So why am I doing two things at the same time? I stopped singing, just focusing on the experience of the water coming down my body and experiencing that. So to me, these little things through the day matter a lot to me, and I think that's more of meditation to me, because then what I do here feeds into my mainstream practice of meditation, and what I do here feeds into the little things as well. So it's kind of a loop, one feeding into other. 100%. So, but specifically in the practice, could you expand on like what you do right now, like today, after you've been on the path for so long? Yes. So today, what is your meditation like? Is it the same thing? Yes. Is it you bringing back your focus into one place? Yes, it is the same thing even today. Okay. Bringing my focus back into one place, which is the sound of the mantra. I think to me, it's not doing new things. It's doing the same things rightly. Yeah. That's what really brings results. Yeah. We don't need to try new things into our practice. If we have a practice and we focus on our practice and keep doing it, honing it, refining it constantly, that's when it starts paying back. If you're creating content, right, you don't have to try a million new things. Keep honing it. Excellence pays back. 100%. In whatever we do. Yeah, I want to add two things here. Yeah, the first is a quote from Bruce Lee. He said, "The man to be feared is not he who practices 10,000 kicks once, but he who practices one kick 10,000 times." True. So that's one thing. And the second thing is, I feel just because of the climate of the country right now, as the political climate and all this, a lot of people kind of look down on the practice of meditation as being like something overly religious, or even when you mention the word mantra, people automatically, a lot of people, especially in urban centers, kind of draw out negative connotations of a mantra. Ki, oh, are you saying that other religions aren't good? Like that's how a lot of people think. In saying that, remember that meditation uses a mantra, but you can also just simply focus on your breath. You can focus on a mantra from your own religion, like a chant from your own religion. That's what people fail to understand. Yes. And keeping that in mind, my next question to you, sir, is that do you face any kind of, I'm sorry for not finding a better word for this, but do you face any kind of disrespect or any kind of a backlash for the color you wear or for the tikka you're wearing? Do you face any kind of disrespect, when you enter, say, a corporate park and people reject you automatically? So have you experienced this? I think earlier it was kind of like that. When I just started my journey of sharing it with the corporate world, there was a little bit of, not necessarily disrespect would be a strong word, I would say discomfort. I would probably call it discomfort, that what's this guy doing here, kind of a thing. And plus my attire is like a religious attire in one sense. I have a big thing on my head, forehead, my hair, everything's like quite religious. I think over a period of time, people have seen the content we've been sharing online, which has nothing to do with religion, which has nothing to do with any faith, which has nothing to do with anything of that sort at all. All our content is completely related to life and humans and wisdom that can transform life. So which is precisely why our following online is a very secular following. Right? We have people from all faiths, all nationalities, all genders, all kind of sexualities, everybody following us, because nobody feels intimidated, nobody feels threatened. That okay, is this guy kind of trying to impose a certain faith or religious belief on us? So what I'm trying to do is very faith and religion agnostic, actually. So which is precisely why people have kind of now seen us that this is not who he is. So now that discomfort is totally gone. Got it. So people don't feel that any longer. So, but what is the significance of the saffron and the tikka? Like, what is the significance of it? Okay, thank you for asking that one. What's the significance? I was in London once walking at Soho Street, Oxford Street near Soho Square.
And one British gentleman came up to me and said, "Is that your favorite color?" Because everything's orange. I said, "I guess so." I didn't of course want to explain to him the deeper significance of what it meant. He didn't want to know. He just wanted to know if it was a favorite color. I said, "Yeah, I guess so." I think orange represents flames of fire. On one hand it represents flames of fire. And in the Hindu tradition, when somebody leaves this world, they're cremated, body is kind of burnt, consumed by the flames of fire. So donning saffron on actually means that I am dead to my own personal interests. It's like these flames of fire have consumed my own selfish interests, and now on, my life is meant to be for the betterment and welfare of others. It's like you're killing your own ego. Killing your own ego, yes. Got it. And it's kind of now living for others. But that's what it's meant to be. Of course, it's a lifelong journey to live by it, but that's what it signifies. The other aspect of saffron also is like you have saffron as in kesar, the saffron strands. So you take saffron strands. If you've ever added saffron strand to a prep, you usually kind of first roast it a little bit on a pan to take the moisture off, and then you take a little bit of milk and crush it hard in that little tiny bowl of milk, and it starts leaving all the color and the fragrance and the flavor, and then you add it to whatever prep, you just add that saffron to it. So if you compare someone's life to saffron strands, then it also means to be a little bit crushed a little bit, roasted a little bit by life, to be able to add color, fragrance and flavor to the lives of others. So that's what it really means. Of course, a long way to go to be able to live like that, but that's what it signifies. You're basically using your own experiences, sharing, at the same time killing off the ego. Yes. Is that why monks also shave their head? Is that a part of... Yes, but there's both sides. It's like, in both sense, some people have long hair. Monks have long hair and long beards as well. And some monks shave off their heads as well. Buddhist monks will shave their heads off. The Krishna faith monks will shave their heads off. Yet you'll find Himalayan monks who have long hairs and long beards. I think either or, whichever way, it's a practice of detachment. Like if you're shaving it off means, okay, hair is an important part of the body, and you groom your hair well, so it gives you a certain look. So okay, I'm kind of rising above it. And if you see monks who have long hair and long beards, even that's a sense of detachment, and I don't care grooming them. So you don't find monks who are have long hair and they go to salons to kind of style their hair. So both kind of signify a sense of detachment from your personal life and your bodily kind of concept. And may I ask you about the tikka as well? Like this particular tikka? Yeah. Yes. So since I follow the Krishna faith, so if you go to a church or a temple or a mosque or any of these places of worship, you will see, or even a government organization for that matter, you will see a flag or an emblem right at the top. Like if you go to the parliament, you'll see any government building has a flag on the top. It kind of gives you a sense that this property belongs to the government of India. Or a temple, this property belongs to a temple or a mosque or a church or whatever, So this kind of a tikka or this kind of a mark put right on top kind of signifies that you're now living a life which is in adherence or affiliation to a certain faith. Got it. So this is now for the Krishna faith. Some people will put it like this, right? And in the Islamic faith, they'll have a cap or they will have a certain mark or a certain way of the beards or moustache. Christians will have they'll probably put a cross in their neck, certain kind of rituals. Yesterday I was even talking about this to somebody, and I was saying, some guy asked me, in London, what is the need for rituals in religion? Whichever faith. And I said to him, why are we even talking about rituals as a part of religion? Rituals are a part of life. Right? Like 2 weeks back was Valentine's Day. Guys went to girls giving them rose flowers. Giving a rose to a girl is a ritual. But it conveys how you feel to that girl. Saying I love you, language is a ritual. But language is a ritual meant to help you communicate the feelings of your heart to the person whom you're communicating to. Giving a gift to someone is a ritual.
Right? But that gift just tells the person that, okay, you mean a lot to me. Singing a birthday song or cutting a birthday cake is a ritual. But it just means telling the other person your birthday matters a lot to me. Man United and Chelsea are playing a game and Man United wins and the whole Wembley Stadium is rumbling, glory, glory, Man United. Everybody is singing. It's a ritual. But that song tells the Man United team how much their fans adore them. Correct? So I was telling this guy in London, I don't think it's about religion. Life is full of rituals. Now imagine a guy going to a girl, giving her a rose and saying, I love you, honey, and not meaning it at all. Correct? Now, if you see the first three letters of the word spirit, they are S-P-I. Correct? Now, you add the first three letters S-P-I to ritual, it becomes spiritual. Wow. You know what I mean? Now, as soon as the first three letters, which means the spirit is gone, what you have is a mere ritual. So somebody coming and saying to a girl, I love you, without meaning it, is ritual. But if it's really meant from the deepest core of the heart, it's a spiritual experience. You know what I mean? Yes, sir. So I think every faith, like every aspect of life, will have means to communicate how they feel to whether they call God, whether they call it universe, whether they call it energy, whether they call it power, or whether they call it nothing. You know what I mean? But there's a means to communicate your genuine feelings, and that's when then this different rituals kind of come into existence. So whether it's a mark on the forehead or beads in your neck or a certain kind of attire or a certain kind of practice that you adopt, it's all meant to be able to express but once the spirit is gone though, what we have is a mere set of rituals, which is what more or less religion kind of today is seen as, and which is why a lot of youth doesn't even want to look at that side, because they see it simply as a set of mere rituals without the spirit there being there. But I think if we can actually get deeper into what the spirit behind it is, a lot of it will actually start making a lot of sense. 100%, sir. Yeah. So, like, why do you think we see, especially in our country, a big reason the youth is not for spirituality as a concept is because a lot of the youth associate spirituality with the whole, the Baba culture. That's what they call it. Correct. So, firstly, why do you think that Baba culture exists in the first place? And secondly, how can we get that section of youth back into understanding the true meaning of spirituality? Correct. Firstly, we were talking about religion and spirituality, right? It's very fashionable to say these days, you know what, I'm not religious. I'm spiritual. I'm spiritual. Hang on, man. Do you know the meaning of the word spiritual? Not being condescending, but it's quite fashionable to say that. I'm not religious, I'm very spiritual. But I'm not too sure even if people even know what the fine line is. I don't think there's a difference between religion and spirituality if the spirit is existing. Then every ritual is also spiritual. But as soon as the spirit is gone, that's ritualistic religion. 100%. So I think with the question about Baba culture and all of that stuff, in every aspect of life, we need mentors, guides, teachers, gurus. Like if I were to learn singing, I would need someone from the Hindustani Gharan side of music or from the Carnatic side of music to teach me what music is. You would have exceptional people like Ranu Mondal, who's like, on this railway station somewhere singing, gifted. These are people who are probably gifted and never trained, but they're exceptions. The general rule is we need to be coached and mentored into learning something, right? I don't think spirituality is an exception as well. Where we need gurus or guides or mentors who will teach us and lead us onto that path. Now, the issue is when the spiritual leaders or coaches or gurus or mentors become the focal point or the center point, and the spiritual wisdom that they are teaching goes at the back seat, then it becomes cultist. What's a cult? A cult is where the figure becomes the center and the message and the practice and the wisdom goes at the back. 100%. Correct? Now contrast that with the wisdom coming to the front and the person saying, okay, I'm here to lead you, I'm here to train you, I'm here to guide you, but this is what you should be connecting to. Correct? That's your real guru. That's your real guru.
Wisdom is your real guru. I'm simply the mouthpiece. I'm simply the microphone. Yes, because I'm the front face, you'll be attached to me. Yes, because I'm a front face, you're going to be attracted to me. Yes, because I'm a front face, you're going to connect to me. But there's way beyond me, something way beyond me, wisdom, knowledge, spiritual forces, powers, and I simply represent them. 100%. As soon as you have teachers and gurus and guides who do that, I don't think the youngsters have a problem with that at all. 100%. They don't deny the fact that we need mentors. They're just frustrated and disgruntled with the fact that, like they say, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. And trust me, the power that spiritual leaders can have, nobody in the world can have. And the simple reason being, they've renounced a lot. They had money, they had opportunities, they put it all to the side and took to a life like this. So you will have the biggest industrialists, the biggest in the cinema world, the biggest in the sports world, coming to the spiritual leaders and sitting at their feet and seeking guidance. When power, money, followers come to you, even if you started with a noble purpose, it's easy to kind of get carried away. 100%. So I feel like your second part of the question was, what do we do to, pull them back? I think we need spiritual leaders who are not attached to their face, who are not attached to their name, who are not attached to their institutions. We need spiritual leaders who are truly, truly wanting to bring wellness to the world. And people who kind of clearly profess and say that, look, it's not about me. It's about what I'm trying to teach. And even in what I'm trying to teach, it's up to you if you want to choose this path. There's no imposition. 100%. So I think if you have that kind of an aspect available, I do feel that the youngsters will kind of be back. So we need more of such spiritual leaders. 100%. So I want to add two things to what you said. Yeah. The first is that I genuinely believe that we are moving into an age like that where we are seeing more ethical spiritual leaders. Correct. And the second thing I want to add is a learning of mine since I left college. It's been 5 years since I left college, and the one big learning of my life has been that throughout your life, you're given a lot of tests. Correct. And these are usually ethical tests. That's right. Things that test your behavior, things that test what you'll do in a particular situation. Now, the thing is, if you choose to be on a spiritual path, the nature of what happens to life is that the frequency of those tests increases. You're given more and more tests and more difficult tests. Where, say, if you do become a spiritual leader per se, you are given that power. Sure. So then it's easier to get your way. It's easier to do the unethical thing because it's the more fun thing to do. Sure. Now, a lot of spiritual leaders, what I believe is that they initially start with the correct intent. They start with the intent of spreading wisdom. But as they themselves grow spiritually, life tests them. And maybe somewhere they fail the test, and that's why you see downfalls. Or, if someone retains the power, it usually means that they've passed the test. Sure. And I also believe that even if the spiritual leader is 120 years old, he's still going to get tests even then. 200%. Yeah. 200%. So, what do you have to say about that, sir? Yeah, I'm in total agreement of what you're saying. And I think there are 2-3 kinds of people the spiritual leaders who come on some come on the path to use it. As in? They come to make this as a profession. Okay, got it. They're not spiritual leaders at all. They see that it works well. It's the easy way out. They don't want to do what's right. They want to do what's easy. How do you spot that? How do you say that? That's precisely why so many issues happening, right? That's the Baba culture that we're talking about. Correct? 100%. Then there are second kind of the second variety is those spiritual leaders who come on the path. And exactly what you mentioned, the tests do come, and although they were kind of totally tuned into their purpose, can get a little carried away, go astray, maybe come back, maybe not, whatever. And third are the ones who actually have passed the test of time and have kind of really remained grounded and level-headed and, been like beacons of inspiration to the world. But yes, tests are there for each and every single one, whether you're a spiritual leader or not. Ethical dilemmas will always be there. And I'll tell you, moral dilemmas are choosing between right and wrong. That's easy. Ethical dilemmas are choosing between right and right, or wrong and wrong. Right and more right. Right and more right, wrong and more wrong. And that's where you kind of really test it. Yeah. So we all have those dilemmas.
And my understanding is, when any leader, not just spiritual leader, political leaders, corporate leaders, spiritual, these principles are true for all. You know, And everyone's not tested. just spiritual leaders. Yeah. The spiritual leaders, just because the conversation is about spiritual leaders, we're saying it, but it's true for every leader. When power comes, facility comes, there is a tendency to get isolated and start living in the ivory tower. You know, where you're not open to learn from others, you're not open to connect to equals. The one thing that successful leaders in any field need the most is equal friendship. Okay. Because in front of your superiors, if you have anybody like you look up to, you're always going to put up a face, your image, which is like great, you know. And in front of people who are younger to you, you're going to always put up an image which is going to impress them. You know, like, so everything good about me. But in front of equals, where you have friends, and people know you in and out, there's very less pretension there. People are superior and inferior, there's a lot of pretension on both fronts. When people are equal and you have good relationships and friendsps, there's very less scope for pretensions, and that's where you kind of have to be open to listen to feedback from your peers and your equals, Even if it's harsh. which usually it is. 100%. Which usually it is. Yeah. And which is precisely why the biggest danger for anybody is to have no one who can kind of correct you. If you feel that I'm beyond anybody's correction any longer, that is when then there is a lot of scope for kind of being dragged down, carried away by what. That's where downfall begins. सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा जो उन्होंने बिल्कुल शुरू में की दिमाग की, कि हमारा दिमाग जो है वो वाकई हमें बहुत सारी वो इस तरह की चीज़ों में डाल देता है कि हम जो है ना, जो एक वो जाल होता है ना अपना, वो खुद ही भूनते जाते हैं, फिर उसमें फंस जाते हैं। अक्सर एक कहावत जो है वो बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिलती है कि दो कश्तियों का सवार कभी जो है वो पार नहीं लगता, वो बीच में ही डूब जाता है। बेसिकली मैं अगर उनकी आज वो बात करूँ ना, उसमें मुझे ये चीज़ नज़र आई है कि आप अपने दिमाग को जितना ज़्यादा उलझाएंगे ना, आप उतने ज़्यादा उलझते जाएंगे। वेल मैं ये कहूँगी है कि कल की जो वीडियो थी वो उसमें जिस तरीके से फोकस करने के बारे में कहा गया था कि लाइफ में आपका एक फोकस होना चाहिए, गोल होना चाहिए उसको अचीव करने के लिए, और आज की जो वीडियो है उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में बात की गई है। और यूजली हमारे साथ होता है कि हम कोई भी काम करना जब चाहते हैं तो वाकई में हमारा जो माइंड है वो बहुत सारे हम कहेंगे कि हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। वो भी काम याद आ जाएगा, वो भी काम याद आ जाएगा। इवन के जैसा आजकल का टाइम चल रहा है, जो हमारा एक लाइफस्टाइल बन चुका है, हम खाना खाते हुए भी मोबाइल यूज करते हैं, तो आपकी जो आपके जो कंसंट्रेशन है वो डिवाइड हो रहा है उस टाइम पर। मुझे ये चीज़ ऑनेस्टली बताऊं बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि मैं भी ये चीज़ करती थी बहुत ज़्यादा। इवन कि अभी भी मेरे से होता है ये कि खाना खाने के साथ साथ मैंने मोबाइल यूज करना है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो उसमें बहुत ज्यादा मुझे लगता है गैप आना शुरू हो जाता है। लेकिन आप अगर चीजों को जो आप काम कर रहे हो आप उसी में टोटली इंडल्ज होकर उसी पर फोकस कर रहे हो, तो आई थिंक आप उन चीज़ों को फील भी करते हो, उस काम की इम्पोर्टेंस को भी फील करते हो, और काम को किस तरीके से करना है ये भी आप जानते हैं, और वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। बिल्कुल मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं भी ये काम अभी भी करता हूँ, मोबाइल यूज़ करने वाला खाना खाते हुए, लेकिन लास्ट टाइम जब इन्होंने मुझे बताया तो तब से लेकर अब तक मैं काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका हूँ। कोशिश करता हूँ कि जो काम शुरू किया हुआ है एक टाइम पे वही करूँ, क्योंकि नो डाउट फोकस आज की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्टली जो है हम लोग बात करें ना तो हम लोग अपना काम इसी वजह से नहीं कर पाते क्योंकि हमारा फोकस एक चीज़ पर नहीं होता। हमारा दिमाग जो है वो एक टाइम पे बहुत सारे रास्तों पर जा रहा होता है कि यार मैंने ये भी करना है, इधर भी जाना है, उधर भी जाना है। बंदा जो होता है ना वो इसी चीज़ में जो है वो बट जाता है कि यार किस तरह चीज़ों को मैनेज किया जाए। लेकिन अगर चीज़ों को मैनेज करना हो ना, क्योंकि एक दिन में अगर 24 घंटे हैं उसमें से अगर हम 14 घंटे भी जाग रहे हैं, अपना काम करें ना एक तरीके के साथ करना चाहें तो हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो है हम क्या करते हैं कि जो काम हमें लगता है ना कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे हम प्रायोरिटी दे देते हैं कि ये कर लेते हैं, जो लगता है कि भाई बस ये ठीक है चल रहा गुजारा, उसे हम बैक पर कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है ना हमारी ज़िंदगी में कि
क्या नाम लेते हैं, हम चीज़ों को जो बैलेंस नहीं कर पाते वो वाकई बहुत ज़्यादा खराबियाँ पैदा करती हैं। फिर उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा जो एंड पे उन्होंने एक और डिस्कशन की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमारे माशरे में देखा जाए तो ये जो है एक तरह की बीमारी ही आप इसे कह सकते हैं कि हमारे ये माशरे को लगी हुई है, बाबा कल्चर वाली। लेकिन मैं उससे पहले मेडिटेशन पर आना चाहती हूँ। बाबा कल्चर में एंड पर बात करना चाहूंगी। मेडिटेशन को लेकर मुझे कुछ नए, मैं कहूंगी कि एक नए एस्पेक्ट से मैंने देखा है, आज की वीडियो में सीखा है, जाना है। यूजुअली हम मेडिटेशन को लेते हैं कि ध्यान लगा लिया हम लोगों ने किसी एक चीज में तो वो ही एक मेडिटेशन होगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक डिफरेंट तरीके से, एक डिफरेंट एंगल से समझाया कि मेडिटेशन ये भी है कि आप जो काम कर रहे हो आप उसको भी पूरे ध्यान के साथ करो, तो इट्स टाइप ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो। क्योंकि मैं ये बात सोचती हूँ कि जैसे हमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिल गई हैं ऑनलाइन, जैसे हम लोग बुक्स जो हैं वो सुनते हैं, बहुत सारी ऐसी एप्स आ गई हैं और साथ साथ हम कोई और भी काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम कभी भी उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, उन वर्ड्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा जो ध्यान है वो इस साइड पर भी बटेगा कि मुझे ये काम भी करना, और मेरे कान और दिमाग इस साइड पर भी होंगे साथ में कि मुझे इसको सुनना भी है, तो इंगेजमेंट दोनों साइड पर रहेगी। बट इसीलिए मुझे लगता है कि जब आप बुक पकड़ते हो, उसको पढ़ते हो, उसको फील करते हो, आप उन वर्ड्स को फील करते हो, तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर तक वो चीजें जा रही होती हैं, वो एक एनर्जी जा रही होती है। मतलब ये मेरी अपनी एक सोच है कि मुझे ऐसा लगता है और फील होता है। इसलिए मैं कभी भी बुक अगर कोई पढ़ूं भी, जो कि मुझे वैसे बहुत ज्यादा बुक रीडिंग का शौक नहीं है, बट अगर मैं पढ़ूं भी तो मैं चाहे थोड़ा 1-2 पेजेस पढ़ूं, बट मेरी कोशिश होती है कि मैं बुक रीडिंग करूं। ये बात वैसे हकीकत है कि आप जो चीज़, यानी कि खासतौर पर मैं रीडिंग की बात करूँ ना, आप जब कर रहे होते हैं ना तो वो चीज़ें वो आप पे इम्पेक्ट रखती हैं। बेशक वो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, बेशक वो आप एक किसी की रियल लाइफ स्टोरी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, वो चीज़ें नो डाउट कहीं ना कहीं आप पे इम्पेक्ट करती हैं, आपको जो है वो असर रखती हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप फील भी करना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। और सैफरन कलर का मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने क्वेश्चन किया और पूछा, क्योंकि ये एक क्यूरियोसिटी होती है जो आप जानना चाहते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया। और मैं रिचुअल्स की यहाँ पर बात करूंगी। हमारी सोसाइटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि रिचुअल्स को और रिलीजन को वो हमेशा मिक्सअप कर देते हैं। कल्चरली जो आपकी चीजें होती हैं उनको हमेशा अलहदा रखा जाता है, और जो रिलीजन है आई थिंक इट्स वेरी पर्सनल कि आपको क्या फेथ फॉलो करना है और किस तरीके से फॉलो करना है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी इस तरह की चीजों में और चक्रों में पड़ी हुई है ना कि हम लोगों को ना इम्पोज करना शायद ज्यादा अच्छा लगता है, और खुद को हम कहेंगे कि अपने आप की भलाई करना, और नहीं, सुपीरियर तो एक अलग बात है। आई थिंक हम लोग अपने आप को कहीं किसी भी लिहाज से बेहतर नहीं करते, हम दूसरों को सिर्फ गाइड करना शुरू कर देते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो। बट मुझे लगता है कि बहुत सारी उन्होंने छोटी छोटी एग्जांपल्स दी जिससे मैं टोटली अग्री करती हूँ कि ये वाकई में चीजें ऐसी होती हैं जो आपको कनेक्ट करती हैं लोगों के साथ, और आप में प्यार, बॉन्डिंग और ज्यादा करती हैं। और अब मैं आना चाहूंगी बाबा कल्चर की तरफ, और उससे पहले एक मॉडर्न जो लोगों में एक बड़ा एक इश्यू भी है कि वी आर नॉट रिलीजन, और सनातन धर्म के बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हम लोगों को बताते रहते हैं, हाँ इनिशियली हम लोगों को भी लगता था रिलीजन है, बट जैसे जैसे हम लोग वीडियोस देखते जा रहे हैं हम लोगों को भी धर्म का मतलब समझ आया कि धर्म इज नॉट रिलीजन। इट मीन्स कि आप जो काम कर रहे हैं, आपके जो कर्म है, जो तरीका है, उसको बोला जाता है। जो आप अच्छे काम, अच्छे तरीके से जो ड्यूटीज हैं आप उसको फुलफिल कर रहे हो, जहां तक मैं समझ पाई हूँ उसको धर्म बोला जाता है, नॉट रिलीजन स्पेसिफिकली उसके साथ अटैच किया जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर लोग हर कैटेगरी के पाए जाते हैं। जो रिलीजन होते हैं मैंने देखा है कि उनमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म आ जाता है, ठीक है, वो अपने आप को बड़ा सुपीरियर कोई समझना शुरू हो जाते हैं। एंड मुझे लिटरली ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और इसीलिए शायद मेरा कभी भी ऐसे लोगों के साथ कभी सोशल सर्कल मेरा बना नहीं। और दूसरे लोग आते हैं जो कहते हैं कि बस भाई वो बस नॉर्मल तरीके से चलते हैं और उनको कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैंने जो अपनी लाइफ में लोगों को देखा है, मैंने इस तरह के लोगों को देखा है। बट हाँ, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई अगर वो कहते हैं ना कि हम लोग कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो कि रिलीजन से एसोसिएट होती है, तो वो उसको थोड़ा सा ना एम्बैरसिंग वे में लेते हैं कि नहीं हम इतने रिलीजियस नहीं हैं, हम इस तरह नहीं हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि एक बैलेंस रखना चाहिए। रिलीजन बहुत ही एक पर्सनल मैटर है, उसको उस तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, और सोसाइटी में हम बेहतरी कैसे लेकर आ सकते हैं इंसानों के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, और फोकस इस पर करना चाहिए। बिल्कुल, मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि वाकई जो एक सोसाइटी होती है ना, वो बहुत सारे लोगों से मिक्सअप होकर बनती है। उसमें हर एक का जो है अपना अपना जो है वो चलने का जो है तरीक़ेकार होता है। लेकिन यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका जो एक है ना तरीक़ेकार, वो आप पे इम्प्लीमेंट होता है, आप उसे दूसरों पे इम्प्लीमेंट जो है वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि जिस तरह का टाइम है, जिस तरह के लोग हैं, कोई एक दूसरे की सुनता तो है नहीं, ठीक है ना। तो जो एक चीज़ है ना, जो आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए करते हैं, वो आपको अपनी पर्सनल रखनी चाहिए। और खैर, अभी हम बाबा कल्चर की तरफ जो है वो जा रहे थे, बात कर रहे थे। हमारे यहाँ पर जो है बाबा कल्चर वो बहुत ज़्यादा जो है इन है। इवन कि जैसे बात की जो है गोपाल दास जी ने कि कुछ लोग जो होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं इस चीज़ में, और नो डाउट हमें आज के वक्त में यही चीज़ देखने की नज़र आती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल है। मैं बड़ी देर पहले एक जगह पर गया था, तो वो जो है जो कहते हैं ना कि पैसे जो देते हैं, ठीक है ना, उनका एक काम था, वो कहते थे कि मैं आपसे कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं लूंगा, लेकिन आपने अगर कुछ देना, बाहर डब्बा पड़ा है, आप अपनी मर्जी से जो उसमें मर्जी डाल जाएं, ठीक है ना। और लोग भर भर के डालते थे। तो ये भी एक जो है ना तरीकेकार होता है लोगों से पैसे हेंटने का। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो क्या नाम लेते हैं, आप अपनी वो एक कहते हैं ना इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरों की हेल्प भी करते हैं। यानी कि अगर हम देखें ना, बाबा कल्चर भी वो भी मिक्स पड़ा हुआ है। कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल हो चुके हैं, आधा जाता कुछ नहीं है, उनके तुक्के लग जाते हैं, चलो काम चल रहा है। लेकिन कुछ लोग वाकई ऐसे होते हैं जो क्या नाम लेते हैं, इस तरह की स्पिरिचुअलिटी रखते हैं कि वो दूसरों के मसले समझते हैं, उन्हें बड़े प्यार तहम्मुल से सुनते हैं और फिर उसका हल भी बताते हैं। वेल, मैं कहूँगी आई एम टोटली अगेंस्ट स्पेसिफिकली ढोंगी बाबा कल्चर, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे लोग देखने को वाकई में मिलते हैं जो बहुत ही ढोंगी होते हैं, और आई डोंट नो कि उनकी इतनी फॉलोइंग कैसे होती है कि लोग उनको इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनकी सेंस कहाँ पर होती है, आई डोंट नो, क्योंकि आप के सामने चीज़ें हो रही होती हैं। और मुझे सबसे बुरी बात ये लगती है कि वो बहुत बाइस्ड होते हैं। हाँ। वो लोगों के बीच में कभी भी मतलब कहेंगे ना कि ह्यूमैनिटी को प्रमोट करना, उसको नहीं वो प्रमोट करते, ठीक है। उनका जो हम कहेंगे कि मोटिव होता है लाइफ का, वो कुछ और होता है। वो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना मेंटोर चूज करने के लिए ना किसी खास हम कहेंगे कि एक ही, अगर मान लें कि अगर एक कम्युनिटी है उसमें से कुछ अच्छे लोग भी होंगे, डेफिनेटली कुछ बुरे लोग भी होंगे, हर जगह पर ऐसा होता है। बट अगर मैं एक फेथ को फॉलो कर रही हूँ तो आई थिंक मुझे सिर्फ उनको ही नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। मुझे इतना फ्री होना चाहिए कि मुझे बाकी सब लोगों को भी सुनना चाहिए, और मुझे खुद चूज करना चाहिए। मेरे पास ये खुद फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं किसको सुनना चाहती हूँ, मैं किसको फॉलो करना चाहती हूँ। क्योंकि यूजली होता क्या है कि हमारे पास ये फ्रीडम नहीं होती कि हम दूसरों को सुने, क्योंकि वो हमारे शायद चीज़ों के खिलाफ हो जाती है बातें, या जो भी, मतलब आई डोंट नो कि क्या उनका एक थॉट प्रोसेस चलता है। बट मुझे ये लगता है कि आपको डिफरेंट लोगों को सुनना चाहिए। अब जैसे हम लोगों ने आज का ये हम कहेंगे कि पॉडकास्ट सुना, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम पहले जानते हैं, बट जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया वो एक असर रखती हैं। तो मेंटोर की वाकई में आपको ज़रूरत पड़ती है। हम लोगों ने कल हम लोगों ने बात की थी, मुर्शिद जिसको बोला जाता है कि जो आपका हाथ पकड़ के आपको गाइड करता है, बिल्कुल आपको जरूरत पड़ती है उसकी। लेकिन वो चूज करना वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये बंदा सही है, क्योंकि जैसे गोपाल दास जी ने ये बात कही कि जो मैसेज है जो कि लोगों तक जाना चाहिए, क्या वो इम्पॉर्टेंट है, वो मतलब मेन पॉइंट है या नहीं है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो उस चीज को कन्वे कर रहे हैं या नहीं। तो मतलब ये सारी मेरी थॉट्स थी जो मैं बहुत क्लियर थी। यहाँ पे मैं एक मजे का वाकया सुनाना चाहूंगा, ढोंगी बाबा वाली। बड़ी देर पहले जो है ना, अब्बू और मैं और मेरी अम्मी जो है, हम एक जगह पर गए। वहाँ पर जाकर जो है ना बैठ गए।
तो उन्होंने जो है ना, बाबा जी की ही बात सुना रहा हूँ, उन्होंने पहले सारों को नाश्ता कराया। खैर मैंने तो नहीं किया लेकिन याद है आपको, तो जब नाश्ता कर लिया ना तो वो बाबा जी के जो वहाँ पे क्या नाम लेते हैं, असिस्टेंट थे, उन्होंने आकर कहा कि भाई 100 रुपये फी बंदा जिसने नाश्ता किया है, सबसे पहले वो उन्हें देना पड़ा। फिर उसके बाद जो है जब हमारे अब्बू की बारी आई तो अब्बू ने कहा कि मैंने तो कुछ दिनों तक बाहर चले जाना है, तो फिर वहाँ पर जो है 2 सेक्शन बना दिए कि जो पाकिस्तान में रहने हैं वो एक साइड पे हो जाए, जिन्होंने बाहर जाना है वो एक साइड पे हो जाए। जब वो हो गए तो फिर जो है जो पाकिस्तान वाले थे उनसे 300 रुपया लिया गया, जो बाहर जिनने आया था उनसे 3000 रुपया लिया गया। तो ये चीज़ यहाँ पर चलती है, ये प्रोफेशनल। बट मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ ना तो मुझे पता नहीं, बट मैं बिल्कुल भी ये चीज़ें पसंद नहीं करती। और लेकिन ये कि इवेंचुअली ये हुआ कि हम लोग अपने घर में ये चेंज लेकर आए। हाँ। मतलब मैं ये नहीं कहती कि मेरे बड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा ज़रूर हुआ है कि कभी अगर किसी ने बताया है कि यहाँ पर चले जाओ, आपकी जो तबीयत ख़राब होती है या कुछ भी ऐसा होता है, आप इस तरीके से हिसाब लगवाएं तो मे बी आपकी मुश्किल आसान हो जाए। तो वो चीज़ें करने के लिए, वैसे मुझे याद भी नहीं है कि क्यों गए थे उस टाइम पर। मेरा ख्याल है शायद अब्बू को जो दर्दें होती हैं उसके लिए गए थे। हाँ, तो मुझे लगता है ज्यादातर तो जब कभी भी जब गए हैं वो इसीलिए जाते हैं। बट मेरा कभी बिलीव नहीं रहा, पता नहीं क्यों। अभी भी मुझे अगर कभी कोई कहे ना कि वहां पर चली जाओ तो मैं कहती हूँ नहीं, मैंने नहीं जाना, क्योंकि मेरा जब यकीन ही नहीं है तो मैं वहां पर नहीं जा सकती। बट ऐसा मैं ये नहीं कहती कि सब लोग एक जैसे होते हैं, कुछ लोग वाकई में ऐसे होते हैं जिनके हाथ में शिफा होती है और जो वाकई में नॉलेजेबल होते हैं, जो वाकई में ऐसा नॉलेज रखते हैं कि जो लोगों के लिए बड़ा बेहतर होता है और उनकी भलाई में बहुत ज़्यादा काम आता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत वाइजली ये चीज़ जो है ना वो चूज़ करनी पड़ती है और सबको सुनना चाहिए आई थिंक बहुत सारे लोगों को, क्योंकि आपको बहुत डिफरेंट एंगल से सोचने का मौका मिलता है। वेल गाइस, अब आई थिंक कल हमारा लास्ट पार्ट होगा इस वीडियो को देखने का और बहुत कुछ और जानने को और सीखने को मिलेगा। एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। आप भी अपने पर्सनल बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए होंगे, ज़रूर शेयर करें हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें इजाज़त, माय वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, videos and keep us in your prayers. Goodbye.